Hello students, today we are going to start with the namings of alcohols, phenols and ethers. In today's video lecture, we are going to study how you name the alcohols, phenols and ethers with the help of examples also we will go through, and the rules how to name alcohols, how to name phenols and how to name ethers that we are going to study. In the previous video lecture, I hope you have gone through the introduction and classification of the alcohols, phenols and ethers. Moving forward, that is naming of alcohols, starting with naming of alcohols. In alcohols, first of all, naming is done in two patterns, that is your common name system and your IUPAC name system. So how to do the naming according to the common name system for alcohols? They are written in the form of alkyl alcohols. They are written in the form of alkyl alcohols. Alkyl and the alcohol group. Whereas IUPAC system, we will follow the rules. So first of all, let us see for alkyl alcohol, that is a common name system. For example, so what is the common name of this group? You know, this alkyl group is your methyl. So the name will be methyl alcohol. So this way you name it according to the common name system. One more example. So according to the common name system, you know this is your tertiary butyl group. This is which group? This is your tertiary butyl group according to the common name system, and this is your alcohol. So what will be the name? Tertiary butyl alcohol. So common name system is done on the basis of this, that is alkyl name is written first, then comes your word alcohol. Next, moving to the IUPAC system of naming. So for IUPAC system students, there is certain rules. So first of all, let us look the rules and then we will do the example regarding this. First rule, alcohols are named by replacing the suffix E. What are they done? They are done by replacing the suffix E in your alkane by OL, and this OL is the suffix for your alcohol. OL किसका suffix है? OL is the suffix for your alcohol. So what you do in alkene, if you are writing it in this form, alkane. So in this alkane, this E, ये जो E है, इसको replace कर देते हो आप by OL. So it becomes alkanol. So it is written in this form in IUPAC system, in the form of alkanol. Next, you have to identify the longest continuous carbon chain. Now, the longest continuous carbon chain, or you can say indicated as the parent chain containing your OH group. अगर आपके पास कोई भी अल्केन वाले कंपाउंड में, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में OH है, so that OH group should be considered as the parent chain. आप वहाँ उसको as a parent chain considered करोगे. Okay. Next, position of the OH group in the parent chain should be indicated by lowest possible number. Means the parent chain which you are considering as the longest carbon chain attached to your OH. If your OH comes in the between of the parent chain, right? So that OH group should get the least numbering. Least number as possible. जितना least number उसको दे सकते हो तो as possible. For example, if I am considering this as a parent chain, you can see. So यहाँ से आप parent chain इसे consider करोगे. So आप numbering इस way में करो कि ये जो OH group है उसे lowest preference मिलनी चाहिए.
So if I go from this order, so it is getting with कौन सी प्रेफरेंस मिल रही है? सेकेंड प्रेफरेंस. बट इफ आई फॉलो दिस ऑर्डर of numbering, it gets the third preference. So what is the rule saying? That position of the OH group indicated in the parent chain should get the lowest possible number. So this is the correct order according to the rule, and the above is wrong. Next, position of the other groups attached to the parent chain is always indicated by number. For example, if any substituent is also present, अगर आपके पेरेंट चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो सब्स्टिट्यूएंट को भी आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप होता तो 3 मिथाइल, यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ योर substituent also while writing the names. Next rule is, if there is a presence of more than one OH group, so that time you use the word mono, di, tri and so on by indicating the number of OH group present. If there is 2 OH group present, you will use the word prefix di. If there is a presence of 3 OH group in your parent chain, you will use the word tri. So are the rules clear? Now with the help of rules, let us see some of the examples how to follow the naming according to IUPAC system. So with the help of rules, let us see some of the examples. So as you can see, the question is, write the IUPAC and the common names of the following compounds. What you have to do? You have to write the IUPAC and the common name system. So first of all, we will write according to common, then we will go for IUPAC. The first example, what is the common system? Common system, common name is on the basis of alkyl alcohols. So you can see 2 carbon means your ethyl alcohol. So what is the name of this compound according to common name system? Ethyl alcohol. Now, according to your IUPAC system, what you have to do? You have to find the longest carbon chain. So longest carbon chain, as you can see, there is only one straight carbon chain and the number should start from the 1. Lowest possible OH group को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, इधर से स्टार्ट करोगे तो सेकंड पोजीशन मिलेगा. सो विच वन इज राइट? अकॉर्डिंग टू द रूल यू हैव टू गिव द पेरेंट चेन विद द OH एज द लोवेस्ट नंबरिंग. OH शुड गेट द लोवेस्ट नंबरिंग. सो according to first, what is the rule? Alcohols are names by replacing the alkenes. So this is your ethane और E किससे रिप्लेस हो जाएगा? सफिक्स ऑफ OL. तो इट इज योर इथेनॉल और यू कैन इंडिकेट द पोजीशन ऑल्सो, दैट इज इथेन 1-ol. बट मोस्ट ऑफ ऑल टाइम you should prefer ethane OL because 1, if it is other substituent is not present, you can directly write it as OL. फर्स्ट पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड का कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, सो इट इज आइसो टाइप ग्रुप. OH आपका सेकेंड कार्बन पे तो आइसो की तरह बिहेव कर रहा है. सो इट इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है. सो दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें आपका OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, एज अ फंक्शनल ग्रुप आ गया, पैरेंट फंक्शनल ग्रुप. कौन सी पोजीशन पे? सेकेंड. अब इस केस में यहाँ से नंबरिंग करो कि यहाँ से नंबरिंग करो, इट विल गेट द सेकेंड पोजीशन इटसेल्फ. सो व्हाट इज द नेम? द नेम इज प्रोपेन. E किससे रिप्लेस हो जाएगा? सफिक्स ऑफ अल्कोहल. कौन सी पोजीशन पे अल्कोहल है? सेकेंड. सो प्रोपेन -2-ol. So this is your IUPAC name, this is your common name. Moving to the third example, CH3CH CH3 CH3OH. So it is looking like which type of compound? Secondary butyl. Secondary carbon की तरह behave कर रहा है. So what is the common name? Secondary butyl alcohol, because this group is acting as a secondary butyl group. Then IUPAC name. IUPAC में अगेन आप कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट. अब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो आपके अल्कोहल को कौन सी पोजीशन मिल रही है? सेकेंड.
यहां से नंबरिंग करोगे तो कौन सी पोजीशन मिलेगी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो थर्ड पोजीशन मिलेगी. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गिव द OH लीस्ट नंबरिंग. तो सेकेंड वाला मोस्ट प्रेफरेबल है. पैरेंट चेन कितने कार्बन की? 4 मीन्स ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए, और E रिप्लेस हो जाएगा आपके उसके पोजीशन से, दैट इज डैश टू ओल. So this is your IUPAC naming. Next, moving to the fourth one. This is commonly known as ethylene glycol. ये आप नाम याद रखना. इसका common name system is your ethylene glycol. This is known as ethylene glycol as a common name system. आपको याद रखना है. Next, IUPAC के according अब आपके पास दो OH ग्रुप है. Parent chain 1, 2, so it is ethane. E रिप्लेस हो जाएगा उसके सफिक्स से. कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट एंड सेकेंड. मेंशन द पोजीशन 1, 2. कितने अल्कोहल है? 2. तो व्हेन मोर देन 1 अल्कोहल आर प्रेजेंट यू यूज द सफिक्स 2 फॉर डाई, 3 फॉर ट्राई एंड सो ऑन. 2 अल्कोहल है तो क्या सफिक्स यूज करेंगे? डाई ओल. So this is the IUPAC system naming for this compound. Last one, CH3, CHOH, CH2, CH2OH. It does not has any common system name because ये common name के according हमारा justify नहीं होगा. IUPAC के according अगर numbering करोगे 1, 2, 3, 4, कौन सी पोजीशन मिल रही है? सेकेंड पोजीशन मिल रही है और एक फोर्थ पोजीशन मिल रही है अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे. अब अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4. सो इधर से किया तो आपको कौन सी नंबरिंग मिल रही है? सेकेंड एंड 4. लेफ्ट राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो नंबरिंग आपकी मिल रही है 1 एंड 3. विच इज द मोस्ट प्रेफरेबल? ऑब्वियसली 1 एंड 3. 2 एंड 4 विल नॉट बी प्रिफर्ड. सो व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड? So the name will be, कितने कार्बन है? 4 कार्बन, that is ब्यूट. 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और E रिप्लेस हो जाएगा उसके पोजीशन और सफिक्स से. पोजीशन 1, 3. हाउ मेनी अल्कोहल? 2 अल्कोहल्स, that is diol. So this way you do the naming of alcohols in common name system and IUPAC system. Next, let us move to the naming system for phenols. So moving to the IUPAC system and the common name system naming of phenols. Phenols are generally this group. The structure is of phenol. This is your phenol, benzene ring with OH, that is a hydroxy derivative. So phenol is the simplest hydroxyl derivative of benzene, and this naming is used for both IUPAC system and common name system. अगर आपको ऐसा ग्रुप दिया है and they are asking you what is the IUPAC name or the common name, so the name you can write directly as phenol. It is known as phenol. Next, methyl phenols are known as generally crisols. मिथाइल फिनॉल्स को क्रिसॉल्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस. Methyl phenols are known as crisols. Now this methyl can be at ortho position. This can be at para. According to this will be ortho. OH को as a primary functional group considered करके this will be ortho, this will be meta, this will be para. So they can be named, it can be present at ortho, तो ortho crisol, meta पे तो meta crisols, para पे तो para crisols. Okay, so methyl phenols are commonly known as crisols. Next, dihydroxybenzene derivatives. Dihydroxybenzene derivatives are known as benzene diol. उनको क्या बोला जाता है? बेंजीन डायोल. एंड पोजीशन ऑफ OH इज इंडिकेटेड. एग्जाम्पल,
This is your dihydroxybenzene derivative if you want to write it according to IUPAC system. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what is the name? Benzene 1,2 diol. Similarly, if it is present at this position, so benzene 1,3 diol. If it would be present in this position, then benzene 1,4 diol. So dihydroxybenzene derivative is commonly named as benzene diol, ठीक है, and position of OH group is indicated. Next, phenols containing carbonyl group. अब phenols containing, अगर आपका बेंजीन पे OH के साथ कोई भी carbonyl containing group है, that time that OH will be considered as your substituent. वो हाइड्रोक्सी की तरह बिहेव करेगा और जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो पैरेंट चेन की तरह बिहेव करेगा. मीन्स इफ there is a presence of this type of compound, so you can see the presence of CHO group over here, that is your aldehyde group, okay, and you can see the presence of OH also. So when this both the groups, that is a carbonyl containing group is also present and your OH group is also present, that is your phenol group, that time this OH is termed according to hydroxy. और ये आपका फिर पैरेंट चेन के अकॉर्डिंग नेमिंग आ जाएगा, इसका नेमिंग आ जाएगा आपके पैरेंट चेन के अकॉर्डिंग. दिस इज योर बेंजल्डिहाइड. सो दैट टाइम इट इज एक्टिंग एज अ डेरिवेटिव. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो व्हाट विल बी द नेम? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. So any of the carbonyl containing groups such as CHO, aldehyde, C double bond O, ketone, COOH, that is your acid, COOR, that is your ester, this type of group carbonyl containing is present, that time your OH is named as hydroxy derivative. That time the OH group is named as hydroxy derivative containing your parent aromatic compound. Clear? Now, this is the priority order. When your benzene ring, when your aromatic compounds have CHO and OH, both in it, CHO will be given as the first priority order. It will be considered as the parent chain and OH that time will be considered as substituent. Same way, if ester is present and your OH group is present, so that time COCH3 will be given the first priority order, then comes your OH, that will be acting as a substituent. Aldehyde and OH. So we have seen aldehyde will be considered in the parent functional group and OH as a substituent. Ketone and OH. Ketone will be considered in the parent chain and OH will be considered as your substituent. But if you have in a ring, अगर आपके पास OH और NH2 group है, that time OH is given the first priority, that is it will be considered as your primary functional group and NH2 will be considered as your substituent. So over here 1, 2. So the name is 2-amine phenol. 2-amine phenol, क्योंकि हम लोग NH2 को as a substituent ले रहे हैं and OH को as a parent chain में, तो benzene ring पे OH means phenol. Same way OH और NO2 दोनों साथ में present होगा, so OH is given as your primary and NO2 is given as your substituent. So this way the phenols are being named.
So let us see some of the examples. Let us solve the questions regarding this now, and it will be more clear to you. So let us start the naming. So you can see the question, same pattern, write the IUPAC and the common name system of the following compounds. So what is this known as? Benzene ring with OH, phenol, common and IUPAC both name will be same. This is known as phenol. Next, benzene with OH and CH3, that is methyl alcohol type, methyl phenol type, right? So it is known as crisols. So common name is orthocrisol. Okay, and what is the IUPAC name? IUPAC first, second. IUPAC name is 2-methyl phenol. Clear? Next, which position according to this? Ortho, meta. So this is your metacrisol, or you can say 1, 2, 3. 3-methyl phenol. IUPAC name is 3-methyl phenol. Clear? Same way, if your OH will be here, then it will be known as paracrysols, or you can say 4-methyl phenol. So crisol structures are clear to you. Next, this is your benzene, dibenzene derivative, diol type. So that is known as benzene 1 substitution. So it is your IUPAC system. Benzene, which position? First and second. How many? 2. So benzene 1, 2 diol, and commonly it is known as catechol. This is the common name system of this group. You should remember. Catechol is the common name of this group. That is benzene 1, 2 diol. Here it is changing the position. So according to the name, it will be benzene IUPAC, benzene 1, 3 diol. 1, 2, 3. And इसका common name system है resacinol. The common name system of this is resacinol. So you should remember the common name. Okay. Next, this common name is quinol, or you can say hydroquinone. 2 are the common name system. Hydroquinone. So this both are the common name of this compound. And what is the IUPAC? Benzene 1, 2, 3, 4. So IUPAC, benzene 1, 4 diol. So these are the some of the common system and the IUPAC system. These are the IUPAC with the white box, and the above are the common name system. This group, that is benzene ring with COOH and OH. So here you can see the presence of carbonyl group. So which priority order just now we have seen? COOH will be given the first priority, और OH किसकी तरह behave करेगा? OH आपका substituent की तरह behave करेगा. So what is the position? First, second. जहाँ आपका primary functional group है उसको first position. So 2-hydroxy benzoic acid. बेंजीन रिंग पे अगर COH है तो उसे हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं. सो दिस इज योर IUPAC naming of this acid, and common name is salicylic acid. What is the name? Salicylic acid is the common name of this compound. Next, you can see
OH है, NH2 है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे? वी हैव सीन NH2 वाला हमने ऑलरेडी देख लिया है, NO2 ले लेते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिलती है? फर्स्ट OH गेट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड NO2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सी पोजीशन पे है? पैरा, तो पैरा नाइट्रो फिनॉल, ये उसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC में हम क्या करते हैं? नंबरिंग मेंशन करते हैं, 1 2 3 4, सो इट इज 4 नाइट्रो phenol. So this is your IUPAC name and this one is your common name. So these are the certain examples according to the IUPAC system and the common name system for phenols. Now next let us move to the common name system and IUPAC name system for ether. So as we have seen the namings of alcohols and phenols, common name system and your IUPAC name system for both. Same way for ethers, we will follow two name system, that is common name system and your IUPAC system. First of all, let us see ethers namings according to your common name system. Now we know that ethers are classified into two types, symmetrical ether, unsymmetrical ether. Symmetrical ether means when your oxygen atom has both the same groups, alkyl groups on both the side. ऑक्सीजन एटम्स के साथ आइदर साइड्स में, दोनों साइड्स में सेम अल्काइल ग्रुप्स है, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स। और अनसिमेट्रिकल ईथर्स कब बोलेंगे? व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द नेमिंग फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर, दैट इज अ मिक्स्ड ईथर। सो हाउ द कॉमन सिस्टम नेमिंग इज डन? कौन सा सिस्टम नेम? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग कैसे करते हैं? नेम द टू ग्रुप्स, जो दो ग्रुप आपके प्रेजेंट है, जैसे ये और ये, ऑक्सीजन के पास आइदर साइड में दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दोनों अलग अलग सेपरेट वर्ड्स लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर अटैच टू द ऑक्सीजन। ठीक है, इतना फॉलो करते हैं। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आपका कॉमन नेम में ये प्रोपाइल है बिकॉज 3 कार्बन प्रेजेंट है, और ये आपका मिथाइल है। सो M पहले आता है कि P? M पहले आता है, सो मिथाइल लिखेंगे, फिर प्रोपाइल लिखेंगे सेपरेटली। डन, इतना समझ आया? नेक्स्ट, फॉलोड बाय द वर्ड ईथर, followed by the word ether. So this is the naming of your unsymmetrical ether. आपके ऑक्सीजन में आइदर साइड में दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, उन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स को नेम करो सेपरेटली, ठीक है, इंडिविजुअली उनका नेमिंग्स करो, एंड while writing the name you have to follow alphabetical order. As you can see over here, this is the propyl group, this is your methyl group. M comes first, so therefore methyl propyl ether, followed by the word ether. Next example, you can see this group is looking like your isopropyl group common name में, so ये आपका isopropyl हो गया, right? और ये आपका मिथाइल हो गया वापस। ऑन द आइदर साइड क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, I पहले आता है कि M? I पहले आता है, सो नेमिंग क्या होगा? आइसोप्रोपाइल सेपरेटली, मिथाइल सेपरेटली, ऑक्सीजन के आइदर साइड वाले अल्काइल ग्रुप के नेम लिख लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन फॉलोड बाय द वर्ड एट द एंड ईथर। सो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ether. So this way you name the unsymmetrical ether according to your common name system. Now moving to the common name system for symmetrical ether. So common naming of unsymmetrical ether, that is two same groups present, दोनों same group present होगा,
that time we use the prefix di before the name of alkyl group and at the end you add the word ether. क्या करोगे? Example let us see. So this is your symmetrical ether, same alkyl group. क्या use करोगे? Prefix di before the name of the alkyl group. So di, which is the alkyl group over here? CH3, मतलब methyl. So dimethyl followed by the word ether at the end. So this is the common name system for your symmetrical ether. Let us see one more example. So you can see again two same alkyl group, that is ethyl. So आप word के आगे क्या डालोगे? Diethyl, that is your alkyl group, and at the end ether. So this is the common name system for your unsymmetrical and symmetrical ether. These two rules you have to follow. Now for your IUPAC system, you don't see whether it is a symmetrical or unsymmetrical. There is only one rule. So let us see that what is the rule to name your IUPAC system for ether. So moving to the IUPAC system of ethers. So you can see the IUPAC system. Ethers are regarded as hydrocarbon derivatives. Ethers को हम hydrocarbon derivative की तरह treat करते हैं, in which hydrogen atom is replaced by an alkoxy group. Hydrogen atom किससे replace हो जाता है? Alkoxy group से, that is OR group. So the larger group R is being chosen as the parent chain. Larger जो group होता है उसे हम parent chain consider करते हैं और जो smallest group होता है उसमें हम word oxy attach करते हैं. So IUPAC system के according it is named as alkoxy alkane. What it is named as? Alkoxy alkane. ये ऑक्सी वर्ड आप किसको दोगे? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करोगे. किसके साथ अटैच करोगे? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ. और पैरेंट चेन किसको कंसिडर करोगे? लार्जर अल्काइल ग्रुप को. लार्जर ग्रुप इज बीइंग चूजन एज द पैरेंट चेन. Understood? While writing the IUPAC system, it is written as alkoxy alkane for ethers. Oxy word, oxy is the prefix you can say used for your ethers. So oxy word is attached to your smaller alkyl group and your alkane group is chosen by your larger group parent chain. Example CH3O CH2 CH3. So ये आपका longest carbon chain alkyl group है तो ये parent होगा, that is your ethane. और ये आपका smaller है तो इसके साथ आप क्या वर्ड अटैच करोगे? ऑक्सी. सो व्हाट इज द नेम? द नेम विल बी मिथॉक्सी इथेन. आपका स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी वर्ड एंड योर पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो. यहाँ पे ऑक्सीजन के आइदर साइड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे 3 मेंबर का चेन है, यहाँ पे ओनली 1. So this is your parent chain, that is your propane, and आपका smallest group क्या है? मिथाइल. तो उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? वर्ड ऑक्सी. So what is the name? Methoxy propane. IUPAC system. Next example, you can see this consists only 1 carbon. ऑक्सीजन के दूसरे साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. So this will be your parent chain, that is your benzene, and this is your smaller alkyl group. तो उसके साथ आप word क्या attach करोगे? methoxy. So methoxy benzene. So this way you do the IUPAC system naming for ethers. Again I am repeating, it is simple. आपको ऑक्सीजन के either side में alkyl groups देखना है. सेम अल्काइल ग्रुप है तो कोई इश्यू नहीं है, इथॉक्सी इथेन आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर सेम अल्काइल ग्रुप है, यू कैन सी ओवर योर एग्जांपल CH3 CH2O CH2 CH3. अब सेम है तो किसी को भी वर्ड दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. इथॉक्सी
इथेन, बिकॉज सेम अल्काइल ग्रुप है. बट अगर डिफरेंट है तो ये जो वर्ड ऑक्सी है वो किसके साथ अटैच करना है? जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप का पार्ट है उसके साथ आप वर्ड ऑक्सी अटैच करोगे, एंड जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, उसको आप एज अ पैरेंट चेन अल्केन सब्स्टिट्यूट करोगे. So this was the IUPAC system naming for alcohols, phenols and ethers. In the next class, we will be moving to the structures of alcohols and the physical properties and preparation of alcohols. Thank you.